Count. We are Okay, live. we are live. Yeah, we are live. So today Okay. podcast is different from all other podcasts you have ever seen and ever heard because in this podcast we are going to do a deep discussion on matrimonial laws, rights, responsibilities and remedy for both the partners. So I have a guest speaker with us, Miss Astha Chadha. She is a practicing advocate in Delhi High Court and an expert in the subject matter. So thank you for joining us and we just welcome you on our podcast. Thank you so much for having me here. Great. So, Madam, we can start our discussion from the. I want us to cover all the aspects of a relationship, like when it's live-in relationship, then marriage, then children, then children's rights. So Right. yeah. So let's take it in a serial order, like how life goes. First we fall in love, then we marry, then this, that. So so how you want to start it? Let's do that. Okay. So first of all, how we fall in love and how we marry, actually, I'm not needed there. But my work starts, once all of that happens, and people are either not aware of the consequences when they enter into a relationship of any kind, and or things have gone south, and then they come running, right? So let's cover all aspects. When you fall in love, there can be three directions in which you can go. One can be you be in a relationship and you can be termed as boyfriend and girlfriend or a couple of any type, right? So in that situation, the laws that you're governed are different. Once you enter into a live-in relationship, which I think is quite common in these times, right? We are, as a generation, shifting from the concept of marriage or the institution of marriage towards Yeah. live-in. Somewhere it does not restrict us. As a generation, as the current generation, we don't like the restrictions or the institution and the extra parties that are attached with the institution of marriage. Because once you get married, it just does not remain between two people. There are Yeah, it's a families involved. family. Yeah. There are families involved. So a lot of times, people come to me and ask, "But what are the laws, that help us if we are in a live-in relationship?" So Yeah. we in India we don't have, say, a definition of a live-in relationship or a particular law that governs a live-in relationship. But has this problem not gone to the courts? Of course, it has. It has. And because once you get into a relationship, there are a lot of factors that are involved. Sometimes there are children involved. So the custody, who gets the children, the custody matter also is there. Then, of course, सबसे बड़ी किसी भी शादी में क्या प्रॉब्लम होती है? Either the children or the finances. तीसरी कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जिसके लिए आप डिवोर्स लेने में डिले करो। हमारे जो हम डिवोर्सेस को 10-10, 15-15 साल चलते देखते हैं, उसमें सिर्फ 2 Mhm. चीज़ें अटकी हुई होती हैं। One is money and the other is custody of children. And if you ask me, in my experience, children are also a latter priority. They are a lesser priority. The biggest is the property, the money involved. Because once you enter into a relationship of any kind, and the relationship has, say, taken the best of your earning age, one party is working and one party is building the home. And once you dissolve the marriage, the latter is left stranded with nothing in their name. That is why majority of cases, in my experience, go long stretch, for a very long period of time. That Why is the it goes biggest. so why it goes so long? It does I mean, is our judicial system is not able to provide the remedy to the couple? There are 2 3 reasons. One is in a matrimonial litigation, that the parties know each other inside out. So whatever one has to say, the other has a counter to it, because they have been the closest confidants of each other.
Second, the emotions are extremely high. Love and hate both are extreme emotions. And Yeah. these people were once in love. So that is the emotion. Because of the emotions involved, it takes them a long time to come to a rational conclusion. You can Hmm. simply go ahead and dissolve the marriage with a mutual consent divorce. But what they choose is they enter into multiple litigations of custody, of divorce, of maintenance. Maintenance also is, you can file into various forums for maintenance. So they enter into 4 or 5 litigations. And then, after wasting a few years, they come to the conclusion, let's go through the mutual consent divorce. And the biggest reason is and only is emotions and ego, right? Ego is a huge part of the problem. And we are also no lesser devils. If I'm, say, representing the wife, I'll give her all the laws that she can use. If I'm representing the husband, I will tell him, say, 20 reasons or 20 strategies how he should not give his wife the maintenance or the sustenance money, or how he can take away the children. So lawyers are also a problem. Let's be very honest on that. It's our job to solve, but a lot of times when we see that it is, honestly, we try. I'm not saying we don't try to solve the problem, but once we see there's no solution, we go ahead and give them a plethora of options to choose from. And of course, the courts are extremely, extremely burdened. They are burdened, and I'll be very honest, they are not really well equipped to handle as well. Delhi courts are still better, but once I go to, say, a Noida or Faridabad or Gurgaon, even in NCR, I don't like the way they function. Half of the Yeah. times, you don't even get to reach the judge. You have to, maneuver your way through the reader. There's no the cause list. Even if there's a cause list, they'll not follow it. In Noida courts, I've seen judges, tell lawyers that I can only handle 15 cases at this time. So you people decide whose is more important. Yeah. Otherwise, I'll give an adjournment to the rest. So at least in Delhi courts, the cause lists are followed. So we are still handling things better. Then there are biases. Even you must have read the newspaper today, where the whole thing is not covered, but one observation about surrogacy, that it was your choice not to marry, and how unmarried woman of 44 years of age is not entitled to surrogacy, and there were some opinions shared. Although, because it was just in today's newspaper, I have not read the entire order and will not get to read it so soon as well. But yes, so biases. We are humans at the end of the day, both legislators and judiciary. We are humans. So biases, we are part of the society. And that is Yeah. why the biases will creep in. But then some laws we have actually have been way ahead of their time. Like the Domestic Violence Act we have. It factored in the concept of a live-in relationship in 2005. At that time, live-in relationships were not this prevalent. Now they are deep rooted even in the B tier and C tier cities. But at that time in 2005, they were not this common. And even if they were, we were not openly talking about them. But Yeah. courts and the legislature, in the DV Act, the legislature and Supreme Court, through its various judgments, actually took into account that there is something called a live in relationship, and what will happen to the partners and the children born out of these relationships. So they are If legitimate they are child out of. They are legitimate children. They are clothed with legitimacy through judicial pronouncements. And in Yeah. DV Act, the, definition of aggrieved woman also covers a live-in partner. So if what because it is a problem, right? When you are into a intimate relationship with somebody and violence has been committed of any sorts, you cannot be left remediless.
Yeah. So that was factored in. But yes, although the strict proof the proof is not as strict as in say a matrimonial dispute, but then they have said that there are conditions. It should not be a weekend relationship. You should be living like husband and wife. But, the society knows you're husband and wife. You've lived together for a reasonable amount of time. You're pooling in finances. Hmm. The society sees you as a couple. So there are a few things. Obviously, every relationship can't be termed into a live-in relation to be a real relationship, but still, there is something that otherwise we don't have any law regarding that. Yeah. So what relationships are not covered as live-in relationship? Where you don't live together, where you are only meeting for, say, weekends or events, or where you are very clear that you're not live-in partners. Roommates can't be considered to be live-in partners. Well, what you do when you're a couple, you pool in finances, you open accounts together, you take care of the children together, you move around in the society like a couple, you stayed for a considerable amount of time. A few months or a few weeks cannot be termed as a live-in relationship. Somewhere जो सोसाइटी लिव इन को मानती है वही कोर्ट्स भी मानती है. Live-in Obviously, relationship. Yeah, sorry to disturb, but live-in relationship is like a young teenager thing, like So teenagers do that. They live in hostel. Like I have seen myself living in a hostel. So don't they have any rights, remedy, responsibilities? of course they do. Once you are in a live-in relationship, the what do you expect? What rights do you expect? प्रोटेक्शन तो आपको ऑलरेडी मिलती है एज अ कपल. Compensation? मतलब एज इंडिविजुअल्स आपको कोई भी आपकी लाइफ पे सबसे ज्यादा बड़ा खतरा क्या होता है फ्रॉम फैमिलीज, राइट? वी हैव सोसाइटीज इन इंडिया जहां मार भी दिया जाता है, तो वो प्रोटेक्शन तो आप नहीं लोगे, वो तो आपकी इंडिविजुअल प्रोटेक्शन है. उसके Yeah. अलावा क्या होता है, आप जो साथ में बिल्ड करो वो कैसे डिवाइड होगा, राइट? सबसे पहला तो वही होता है. तो उसमें आपका उसको हम जब मेंटेनेंस को कवर करेंगे तो साथ में विल कवर दैट इन डिटेल, राइट? देन बच्चे अगर इफ चिल्ड्रन आर बोर्न आउट ऑफ, तो वो क्या होंगे? दे शुड नॉट बी टर्म्ड एज इलेजिटिमेट चिल्ड्रन merely because you didn't take the सात फेराज or you didn't go to a court and sign on a register. Hmm. उसके बाद बच्चे होते हैं. तीसरा, if your partner say abuses you in any way, ये वाला राइट जो है ये सिर्फ वुमेन के लिए है, बिकॉज डोमेस्टिक Domestic वायलेंस violence. मिलता है. तो उस केसेस में आपका शेयर्ड हाउस होल्ड का जो राइट है, घर में रहने देने का, आपको मेंटेनेंस देने का, आपको प्रोटेक्शन देने का, इफ देयर इज अ चाइल्ड कस्टडी इशू उसका, ये सारे राइट्स आपको मिलते हैं इवन व्हेन यू आर इन अ लिव-इन रिलेशनशिप. एंड वन मोर हिना, आई लाइक टू से, ये चीज टीनेजर्स में नहीं. नहीं. Couples are in a live-in relationship in every age group. Yeah. Unfortunately, people who are homosexuals or of any, वो तो बेचारे वो तो शादी करना भी चाहे तो नहीं कर सकते ना हमारे कंट्री में. और ऐसा नहीं है, heterosexual couples are also living. I've seen people who've been in real relationships for almost 20-25 years and Yes. not got married because they chose not to. Because live-in relationship is between two people. A marriage obviously has a lot of other people involved, and problem वहीं कुछ लोगों के लिए शुरू हो जाती है. There's no acceptance for some people. तो ये हर So, एज ग्रुप में, हर स्ट्राटा में. so this domestic violence is only available, this remedy is only available for women or for men also? Domestic Violence Act is only the aggrieved person can only be a woman. Only and only Agree? be a woman. Aggrieved person, Women. okay. So Domestic Violence Act में एक definition है aggrieved person की. Normally हमारे दिमाग में क्या आता है? What comes to our mind? Husband beating wife. Simple. उसके अलावा हम wife के अलावा किसी को aggrieved नहीं मानते. But Yes. act मानता है, right? So any woman who is or presently living or has been in the past
been in a domestic relationship in a shared household, as in they've lived together in one household. Now, this can be a mother, daughter, sister, sister in law, mother in law, any woman in a domestic relationship. Any. You name it, you have a relationship, you are covered under the Act. And in 2005, they also covered a live in partner. So Hmm. that, so that was one step which I'm very proud of the legislatures took. Although no law is perfect in India, but then this was one thing they kept in mind even when the society was not ready for it. Hmm. Nice. This is really interesting. Even living partner में male female both cover हो गया, no? नहीं, डोमेस्टिक नहीं? वायलेंस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करी ना आपने, डोमेस्टिक Yeah. वायलेंस एक्ट फीमेल्स को प्रोटेक्ट कर रही है ना, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी मानते हैं कि थोड़ा वीकर सेक्स है एंड एज अ सोसाइटी मिस्चिफ क्या है, हर लॉ वही बनेगा जहाँ कोई मिस्चिफ होगी, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। Hmm. प्रॉब्लम एज अ सोसाइटी कहाँ है? फीमेल्स को अब्यूज किया जाता है ना, तो एज लॉ मैं मान रही हूँ देयर देयर ऑलवेज बी दैट डिस्कशन कि ऐसा नहीं है कि मेल्स आर नॉट Yeah. विक्टिम्स, बट अनफॉर्चुनेटली एज अ सोसाइटी वी हैव नॉट रीच्ड अ प्लेस वेयर हम इस लॉ को जेंडर न्यूट्रल बना सके। Hmm. जिस दिन सोसाइटी उतनी डेवलप हो जाएगी जहां हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, then I don't think that this law will be needed anymore. But as a society, we are not equal. So the laws, it's very difficult. But ऐसा नहीं है कि all laws are not gender neutral. There are a lot of laws that are gender neutral. बस हमें So, पता है दिमाग में there's yeah. this perception. And social media and newspapers add to it. हमारे बहुत बैठे हैं बोलने को. Yeah. So now we can cover the marriage part, like after marriage, rights, responsibilities, remedy for both male and female, like Okay, husband and so wife. should I stick to maintenance as that's the topic we've given people, or I can cover whatever you give me anything else? We can cover maintenance and Hmm. also responsibilities and remedy available in the court of Okay, law. okay. So let's start with the main topic that we all joined for, right? After marriage, then let's stop. सबसे पहले let's cover maintenance and let's get it done with, right? Because कहीं ना कहीं जब भी आपकी कोई भी litigation फंसेगी, तो सबसे ज्यादा चुभेगा दोनों पार्टीज को यही चीज। देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स किसी को डिवोर्स नहीं चाहिए, जहां आपने इंडिया में 30-40 आप 40 के ऊपर गए एंड देन यू कम टू द लॉयर फॉर डिवोर्स, half of the time you know your marriageable age in India is over and you don't want a divorce. What you want is the wife wants कि मैंने शादी को 20 साल दे दिए हैं, I can't earn anymore because मेरी opportunities खत्म है, तो मुझे किसी तरह से, हिंदी में कहते हैं गुजारा भत्ता और इंग्लिश में कहते हैं मेंटेनेंस, तो आई वांट सर्वाइवल मनी फॉर मी एंड माय चिल्ड्रन। एंड हस्बैंड कहता है कि मुझे इस लेडी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये मेरे बच्चे भी लेके चली गई है, इसे पैसे नहीं दूंगा। So the major contention will always be alimony and maintenance. Hmm. Everything else comes later. So let's go for maintenance. Yeah. Maintenance is covered under a lot of acts. सबसे marriage acts पे आते हैं. Hindus are governed by the Hindu Marriage Act. When two Hindus get married, they are governed by the Hindu Marriage Act. Hindu Marriage Act में maintenance जो है वो gender neutral है. मेंटेनेंस एंड एलिमनी दोनों हिंदू मैरिज एक्ट में जेंडर न्यूट्रल है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम द स्पाउस whosoever is earning less than the other and is unable to maintain himself or herself. Hmm. Majority of the times, of course, as a society, ladies को नीड ज्यादा होती है, तो आपको केसेस कम मिलेंगे, बट लॉ आपको परमिट करता है कि आप अप्लाई कर सकते हो। ये सेक्शन कब लगेगा? जब आपका कोई भी डिवोर्स का या जुडिशियल सेपरेशन का या रेस्टिट्यूशन का कोई भी ये वाला केस कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप उसके साथ मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मांग सकते हैं व्हेन बोथ द पार्टीज आर हिंदू एंड यू मैरिड अंडर अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड कस्टम्स।
जब आपने 7 फेरे लिए हैं, आपने अपने लोकल कस्टम के हिसाब से शादी करी है. Then you come to special marriage act. Now special marriage act में कोई भी दो लोग जब शादी करते हैं, anybody, whether you belong to two different castes, religions, or even अगर आप दो हिंदूज ही हो but you've gone to the court and you've chosen the court way, then you are governed by the special marriage act. देन यहाँ पे बट इसमें आप लेडीज को ये राइट अवेलेबल है, आप यहाँ पे मेंटेनेंस मांग सकते हो. अगेन लॉज आपके डिवोर्स के साथ आप मांग सकते हो. देन हिंदूज को एक और एक्ट अवेलेबल है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में आप वाइफ हो तो, आप बच्चे हो तो, आप डॉटर इन लॉ हो तो आप फादर इन लॉ से मांग सकते हो, आप यहाँ पे मेंटेनेंस मांग सकते हो. अब सपोज यू आर इन अ मैरिज, अब आप हाउ विल यू चूज? आपकी शादी हो रखी है, नाउ यू डोंट वांट अ डिवोर्स बट यू ओनली वांट मेंटेनेंस, देन यू गो अंडर दिस एक्ट, राइट? दैट इज द डिफरेंस. अब एंड ये बहुत ज्यादा होता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट वांट डिवोर्स, यू नो. आई सो मेनी टाइम्स डिवोर्स, वो लोग कहते हैं मुझे ये सब कर दो, हाफ द टाइम्स दे आइदर से मेरा स्पाउस को वापस मना के वापस लाना है, और दे से कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं डिवोर्सी का टैग नहीं लेना चाहता या लेना चाहती. तो डिवोर्स प्रोसीडिंग नहीं चाहिए मुझे, आप या मेंटेनेंस दिला दो या चाइल्ड कस्टडी दिला दो. तो उसमें ये वाला प्रोविजन एक्चुअली कम्स इनटू प्ले when you don't have a divorce proceeding going. Then let's come to another gender neutral, religion neutral, and an act जिसमें मुझे लगता है बहुत दम है, and that is section 125 of CRPC, Code of Criminal Procedure. ये जो आपका मेंटेनेंस का सेक्शन है, इसमें वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, बच्चे फादर से और मदर से ले सकते हैं, एंड पेरेंट्स अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं. एंड इनिशियली इसमें भी डिस्प्यूट था. एज इंडियंस ना हम ये मानते हैं बेटा प्रोटेक्ट करेगा हमें, बेटी तो पराया धन हो जाती है. सो देयर वाज अ डिस्प्यूट जिसमें पेरेंट्स की बेटी थी, वो बेटी के पास गए और उन्होंने कहा हमें मेंटेन करो. द गर्ल इट केम टू द कोर्ट एंड कोर्ट्स ने ये बोला कि पेरेंट्स कैन टेक मेंटेनेंस फ्रॉम बोथ सन एंड डॉटर. जब आप इक्वली पाल रहे हो अपने बच्चों को, सो यू हैव इक्वल एंटाइटलमेंट एज वेल. सो यहाँ जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है, ये जेंडर न्यूट्रल है. आप मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों को दोगे, आप मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों से लोगे मेंटेनेंस इन केस यू आर द सीनियर सिटीजन, राइट? अब इसमें ये हमने बात कर ली जेंडर न्यूट्रल की. अब इसमें क्वेश्चन आया कि जैसे क्या ये रिलीजन न्यूट्रल भी है? जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हमने डिस्कस किया, वो सिर्फ हिंदूज को अवेलेबल है, एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है. वहां मेहर वन टाइम एलिमनी की तरह यूज हो जाता है, राइट? बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस एज सच, मंथली मेंटेनेंस. तो अगेन दिस क्वेश्चन केम कि मुस्लिम्स पे क्या अप्लाई करेगा, अगर मुस्लिम वाइफ है तो वो गवर्न होगी नहीं होगी. तो एट दैट टाइम द कोर्ट सेड कि ये सेक्युलर प्रोविजन है, इसमें कोई भी रिलीजन मेंशन नहीं है इस सेक्शन में. तो बी इट अ हिंदू वाइफ, मुस्लिम वाइफ, क्रिश्चियन, जू, व्हाटएवर, आप अगर सेक्शन 125 में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आए हो अपनी पिटीशन लेके, तो आप मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड हो, अगर ऑफ कोर्स आपके पास एक रीजनेबल कॉज है इस मेंटेनेंस को लेने के लिए. देन एक क्वेश्चन और आया कि सेकंड वाइफ एंटाइटल्ड होगी नहीं होगी. तो उसमें ये उठा कि अगर हिंदू वाइफ है, क्योंकि हिंदूज में वन मैरिज इज अलाउड, बाइगमी इज इलीगल, तो सेकंड वाइफ विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वाइफ. तो उस सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं मिल सकती. बट अगर मुस्लिम वाइफ है, मुस्लिम में तो 4 वाइफ्स आर लीगल वाइफ्स, तो जब आपकी शादी लीगल है तो 125 के अंदर आप गवर्न हो. देन आर अगेन लिव इन पार्टनर्स, तो लिव इन पार्टनर्स को मिल सकता है. So there were a lot many questions that came to the court, you know, in due course of time. So the court came to the conclusion was कि अगर
आपके पास एक रीजनेबल कॉज है अलग रहने का, अगर आप खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, इफ यू आर अनेबल टू मेंटेन योरसेल्फ, and if you can give the court sufficient, you don't have the sufficient means, then you are entitled. Now again a very interesting thing came. The law says that a wife living in adultery is not Hmm. entitled to maintenance under section 125 CRPC. But Hmm. the word living in adultery means continuous adultery, right? She is Yeah. living in I'm about adultery. to say this. Yeah. सिंगल इंस्टेंस ऑफ अडल्ट्री पे आप उसका राइट डिफीट नहीं कर सकते मेंटेनेंस का. एंड देयर हैव बीन केसेस दैट हैव कम जहां वाइफ की अडल्ट्री है लेकिन वन इंस्टेंस है. एक आध सोल इंसिडेंट्स को हम इंसिडेंट्स नहीं मानते, जैसे हम डिवोर्स में क्रूअल्टी के सोल इंसिडेंट्स को इंसिडेंट्स नहीं मानते. हम कहते हैं कि नहीं, जो होना चाहिए परपेचुटी में होना चाहिए. हम ऐसे एक बार तो गलती हो जाती है, राइट? इट इज अ प्रॉब्लमैटिक पॉइंट बट इट इज देयर इन द लॉ, Yeah. राइट? तो एक ये हुआ. देन 125 सीआरपीसी जो है ना, ये समरी प्रोसीजर है. इट टेक्स अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. इसे आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना. डोमेस्टिक वायलेंस में आओगे तो आपको यू हैव टू कि आपको you've suffered violence. You have to prove that you are unable to. So it was a long process, right? This is comparatively, and Hindu Adoption and Maintenance Act या Hindu Marriage Act में तो this is a comparatively longer procedure. But ये एक summary procedure. छोटे जल्दी. मैं रियल लाइफ की बात नहीं कर रही. रियल लाइफ में कभी कभी लंबा भी पूछता है. But in books, it is a summary procedure. The Yeah. act works in that way. एंड सबसे अच्छी लॉ की बात क्या है? जेंडर न्यूट्रल है, रिलीजन सेक्युलर है, एंड ये बच्चों को भी कवर करता है, ये पेरेंट्स को भी कवर करता है. एंड बहुत कम इंडिया में ऐसे लॉज हैं जहां बेटियों के पेरेंट्स प्रोटेक्टेड. हम वी ऑलवेज से दैट women have equal rights in parents property, but Yes. very rarely do we have laws जहां पेरेंट्स प्रोटेक्टेड हो. Parents of a Hmm. girl child. We've still not reached there. Our legislature has still not reached there. तो यहाँ the courts took into account कि बेटी से भी आप मेंटेनेंस ले सकते हो. So that I think is a very progressive step, right? Then we have, अच्छा इसमें वाइफ जो है ना सेक्शन 125 में, इसमें डिवोर्स्ड वाइफ भी आपकी कवर होती है जब तक वो दोबारा शादी ना कर ले, बिकॉज शी वॉज वंस योर वाइफ. यू कैन नॉट से कि मेरा तो अब डिवोर्स हो गया, नाउ आई विल नॉट गिव यू मेंटेनेंस अंडर दिस लॉ. सो वंस अ वाइफ टिल शी रीमैरीज इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड इफ यू आर एन एबल बॉडीड मैन, देन आपने भी बहुत बार आजकल न्यूज में बहुत कवर भी हो रहा है ना, इफ यू आर एन एबल बॉडी मैन देन फिजिकल लेबर करके भी वाइफ को पैसे दो. ये आजकल आपकी न्यूज क्लिपिंग्स भी बन रही हैं बहुत ज्यादा. Yeah. तो ये है कि इफ यू आर एबल बॉडी, क्योंकि हम मानते हैं एज अ लीगल सिस्टम कि इंडिया में जेंडर रोल्स थोड़े ऐसे हैं कि मेन आर सपोज्ड टू बी केयर टेकर्स, सॉरी अर्नर्स, ब्रेड विनर्स, एंड वुमेन आर सपोज्ड टू बी केयर टेकर्स. तो हम एज अ कोर्ट थोड़ा बहुत मेजॉरिटी केसेस में मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं वुमेन की अपॉर्चुनिटीज सैक्रिफाइस हुई होंगी टू बी इन द रिलेशनशिप, टू मेक द रिलेशनशिप वर्क. Hmm. तो दैट इज वाई. अच्छा इसमें देयर बीन आल्सो कि हस्बैंड्स ने बहुत बार बोला है कि मैं तो रहना चाहता हूँ. ये बहुत बड़ा टूल जब हम एज लॉयर्स मेन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बट मैं तो रखना चाहता हूँ. शी शुड कम बैक, व्हाई शी स्टेइंग अवे? इन दैट सिचुएशन you have to prove कि there is a valid reason why you're staying away. Either he is living with other women or he is abusive to another extent. You have to prove some reason why it should not be defeated your right to maintenance. हस्बैंड्स के लिए ये बहुत बड़ा टूल यूज होता है. जहां हस्बैंड पे केस आएगा वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस इन रिटर्न डालेगा ही डालेगा. वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस डालेगी, हस्बैंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स डालेगा. ये तो ये कहते हैं ना बिल्कुल Right. पेटेंटेड वो है कि मतलब ये होना ही होना है. ये एप्लीकेशंस रेडी होती है लॉयर्स के पास उस वक्त, राइट? Hmm. देन लेट्स कम टू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट.
I find it to be a very useful law to cover. Reason being, उस कभी कभी क्या होता है, a client cannot afford multiplicity of litigation. They cannot afford to file 4 or 5, although the more the merrier. Because आप किसी पे भी जितने केसेस करते हो या को आप जिसकी it's at the end litigation is a battle of wit and the battle of potential to fight. जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास बेटर लॉयर्स होंगे और जो अपने लॉयर्स को ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो गिव अप नहीं करेगा. मैट्रिमोनियल लिटिगेशन majority of the times ends into settlement. So whoever loses steam first wins. Because courts तो decide करने में लेंगी बहुत time. So domestic violence act ना एक तरह से it's a one stop solution to a lot many problems. You file one case, you get custody of children, at least temporary. You get maintenance. You get shelter in the rights of a shared household or a roof over your head. You get protection. So you get a lot many things with one by invoking one jurisdiction. Secondly, at least for the wife, that helps a lot, right? And even the husband, उसको 4 केस नहीं लड़ने पड़ रहे हैं. तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसमें मेरे हिसाब से सबसे स्पेशल लॉ है. A, it is a secular provision. There is no religion involved. A woman of any religion. Secondly, any woman who is in a domestic relationship. So as we discussed, mother, daughter, sister, mother-in-law, daughter-in-law, it's sister-in-law, आपकी भाभी, आपकी नंद, whoever is staying with you, right? जेठानी, whatever you call them in Hindi, ये सारे जो आपके रिलेशंस हैं, अगर आप एक छत के नीचे रहे हैं और आपके साथ कोई किसी भी किस्म का वायलेंस कमिट हुआ है, not only husband beating his wife or not only sexual violence, but abusing, जैसे मैरिजेस में ताने बहुत मारे जाते हैं for not bearing a child, not bearing a male child, not getting enough money, not getting enough dowry, not being up to the mark. तो वो सब भी. So इसमें कुछ ना कुछ, आप मेरे सामने कोई भी शादी ला के रख दो, you a lot of times, people will come to me and say, they'll narrate, and then either side, husband wife, they'll say बस यही है, और उसमें आपको इतने instances of abuse मिलेंगे दोनों के ऊपर, और उनमें से आधे तो फीमेल्स एटलीस्ट मान के चल रही होती हैं कि ये तो अब्यूज ही नहीं है, क्योंकि दैट इज समथिंग एज अ सोसाइटी हमने कह दिया कि ये तो ओके है, एक्सेप्टेबल. एक थप्पड़ ओके है, अब्यूजिव होना ओके है, आपके सारे पैसे ले लेना ओके है, आपको अपने पेरेंट्स के यहाँ ना जाने देना ओके है. तो अलॉट मेनी टाइम्स आपको कोई ना कोई फैक्टर ऑफ अब्यूज मिल ही जाएगा उस केस के अंदर, व्हेन यू लिसन टू द क्लाइंट प्रॉपर्ली. तो डीवी इन दैट मैनर आपके पास भी, क्योंकि से अगर आपके पास एक क्रिश्चियन क्लाइंट आता है या मुस्लिम क्लाइंट आता है, व्हाट डू यू डू? HMA रूल्ड आउट, स्पेशल मैरिज एक्ट रूल्ड आउट, हिंदू मैरिज एक्ट रूल्ड आउट, अगर आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ रूल्ड आउट, आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट रूल्ड आउट. So what are you left with? You're either left with a 125 CRPC or you are left with domestic violence act. उसमें भी अगर वाइफ, पेरेंट या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो what are you left with? You are left with domestic violence act at the end. Yes. तो but that will all depend on case to case, right? जो आपके facts हैं. Yeah. But So what is the role then of habeas corpus in it? Like children maintenance. I've seen litigants are filing habeas corpus for child custody. So habeas is it corpus, really a good remedy? again I said it depends. अगर हाँ. आपका बच्चा है और you are not getting access, आपको पता नहीं है कहाँ है, या आपको पता है कहाँ है, but you can't help it. Habeas corpus is what? Habeas corpus is produce the body. अगर Produce एक the body. डिटेंशन है किसी भी तरह की, ऑब्वियसली पुलिस डिटेंशन के लिए नहीं फाइल करोगे, बट अगर एक इलीगल डिटेंशन है,
तो हेबियस कॉर्पस तो वहां एप्लीकेबल होगा. Hmm. majority अदरवाइज अगर आपको सही में कस्टडी चाहिए, हेबियस कॉर्पस तो आप ये कह रहे हो ना, बट इंसान है भी कि नहीं है, जिंदा है नहीं है, मेरे को दिख भी नहीं रहा, मुझे एक्सेस भी नहीं मिल रहा, एटलीस्ट ये तो देख लो Mhm. इफ दैट पर्सन प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. Yeah. बट व्हेन यू वांट टू फाइल अ कस्टडी बैटल, देन यू गो थ्रू प्रॉपर चैनल्स. आप प्रॉपर चैनल्स से जाओ. आप अपना, अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो तो उसके पर्सनल लॉज से जाओ. अगर आप टेम्पररी कस्टडी चाह रहे हो तो आप बीवी से जाओ. तो आप, वरना आप गार्जियन तो हो ही ना एट द एंड ऑफ द डे. अगर आप पेरेंट है तो नेचुरल गार्जियन तो आप दोनों हो. बट एट द एंड ही ना, इफ यू आस्क मी ना, इंडियन कोर्ट्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक्शन लेते लेते, वो कहते हैं ना चक्री घूमते घूमते, इट टेक्स सो लॉन्ग. इंटरिम रिलीफ हम कहते हैं जल्दी मिलेगा, इंटरिम इज ऑल्सो नॉट इंटरिम इनफ. तो जिसके पास एज इन वेयर इन स्टेटस को, तो जितना जल्दी स्टेटस को फेवरेबल कर लोगे ना, जो घर पे है वही रहेगा इंडिया में. तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, आपके सिविल केसेस, वो पता है सबको 10-15 साल चलेंगे. तो जो रिस्पोंडेंट होता है वो आराम से घर पे बैठा रहता है, उसको पता होता है मुझे 15 साल तो कोई नहीं हिला सकता. उसके बाद डिक्री आएगी, फिर एग्जीक्यूशन कुछ साल चलेगा. Hmm. सिमिलरली जिसके पास बच्चों की कस्टडी रहेगी, मदर या फादर, एक तरह से तो वो जीता हुआ है. जिसके पास शेयर्ड हाउस होल्ड का पोजेशन है, वाइफ और हस्बैंड, एक तरह से तो वो जीता हुआ है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही मेंटेनेंस में आती है, क्योंकि इफ द वाइफ इज नॉट अर्निंग इनफ, मेंटेनेंस बिकम्स अ प्रॉब्लम. यू कांट, okay fine, DLSA is available to women, lawyers through DLSA is available to women, but I've seen so many times DLSA lawyers will not appear for you because poor fellow, those are also running against time na. They are getting less money, they are given a number of cases. I see bails getting rejected because lawyer appear nahi hua in criminal matters. And at the end the court also gives up and says मुझे even, मतलब आपको बताना पड़ता है बाद में जाके कि DLSA lawyer था, appear नहीं हुआ. Same way, women को free legal aid है, but then the quality of free legal aid in India is very rarely something that actually helps you. Yeah. Because they're burdened. They're overburdened also. Actually, so you have to send your children to school. You have to earn the next. You have to eat the next meal. So somewhere interim maintenance actually takes a lot of time, and that is where, when we are representing men, so that is a part of strategy. That is a part of strategy. पहले तो एक आध appearance जाओ मत, उसके बाद जाओ तो आप पहले reply दोगे, फिर आप कुछ करोगे. So that is, and that has come in front of the court. That is why the Supreme Court, Rajneesh versus Neha में, आप देखो ना, कोर्ट कहती है कि that is why we've, after there has, this dispute has been I think there for n number of years, कि मेंटेनेंस कब से ग्रांट होगी. डेट ऑफ एप्लीकेशन से ग्रांट होगी जब आपने एप्लीकेशन फाइल करी है, या डेट ऑफ ऑर्डर से ग्रांट होगी जिस दिन फाइनल ऑर्डर आया है, या आपका डेट ऑफ समन्स से ग्रांट होगी कि आपको समन्स एज रिस्पोंडेंट मिला कब. तो ये Hmm. 3 डिफरेंट डेट्स हैं. अगर डेट ऑफ ऑर्डर से ग्रांट होगी तो गुड फॉर यू, डिले द ऑर्डर. अगर डेट ऑफ समन्स रिसीट से ग्रांट होगी, गुड फॉर यू, इवेट द समन्स. That is why over a period of time the courts have come to the conclusion कि आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन से ग्रांट होगी, आपका ऑर्डर कभी भी आया हो. So if you are delaying, then you have to pay in retrospect. You have to pay the entire amount from the date of application. So Yeah. this is something that the courts have struggled with. Yeah. Then another thing the courts have struggled with is overlapping jurisdictions. The challenge the courts have actually faced for years. Like how many? I think I told you 5 or 6 provisions that were applicable for maintenance. Just imagine a wife going in for these 6 provisions, under these six, to 6 different forums, claiming maintenance, stating that how poor she is and how rich the husband is, making the husband fight in those 6 forums,
and those 6 forums say awarding different amounts of maintenance. So there is an overlapping jurisdiction. So over Yeah. a period of time, the courts have come to a conclusion about that as well. In Rajneesh versus Neha, they told you to file an income and affidavits, assets and liabilities affidavit, which we also called an income affidavit, right? तो Yeah. उसमें आप सब लिखवाते हैं कोर्ट्स आपसे 3 साल के बैंक स्टेटमेंट्स दो, आईटी रिटर्न्स दो, आपके नाम पे सारे असेट्स दो, लायबिलिटीज दो, आपके डिपेंडेंट्स दो, क्योंकि पहले क्या होता था, देयर हैव बीन टाइम्स नो, the wife will say I'm very poor, the husband will say I'm very poor. I don't know how they were enjoying a lavish life before they separated. The And courts are also all there is a penalty also, no? If you don't file the correct affidavit, there is uh, a imprisonment or penalty. There's something. frankly No? speaking, the contempt of court, the contempt Yeah. that right. Frankly speaking, on paper you can lie as much as I'm not suggesting that you should. I normally don't. I like to file a true and full disclosure. But I've seen a lot of times people telling courts that the opposite party is lying to through their teeth. And the court says, okay, fine, I'll see to it later. Hmm. Why we'll see to it during the final order. Nothing happens. There have been a few instances, but they are so rare and few that sometimes you are, tempted to do what is not right. Sometimes you are, because there are no consequences in majority of cases. People go scot free. So that is a problem they face. But still, at least we are somewhere. You cannot go and give the when you see that affidavit, it is so detailed. It is so difficult to lie out there. Because if you lie, they'll see your 3 year bank account statements. And your bank account statement reflects even the bank locker rent that you are paying. Nowadays, we are using Paytms and UPIs. 5 rupee transactions are there in a bank account statement. How much Yeah, will you lie? UPI. How much will UPI is you making it more difficult. lie? With the digitizing currency, it will become more and more difficult. हाँ, वन थिंग पीपल एंड अभी तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट से पूरे के पूरे गायब कर देते हैं. विद द कनेक्टिंग एंड योर आधार्स एंड योर पैन्स बीइंग लिंक्ड, it will become very difficult once this whole ecosystem becomes one. It will become very difficult over a period of time. तो हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है. ऑनेस्टली आज भी हम भी स्ट्रगल करते हैं. इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू प्रूव इन कोर्ट कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, बिकॉज कोर्ट नहीं सुनना चाह रही है उस वक्त. इंटरिम एप्लीकेशन के वक्त, इंटरिम मेंटेनेंस के वक्त कोर्ट वो नहीं सुनना चाह रही है, टू बी ऑनेस्ट विद यू. मेजॉरिटी वो नहीं Reason? सुनना चाह रही, वो मान रही. Look, we are overburdened. Let's be honest. We are overburdened as a court system, as a judiciary system. Secondly, interim maintenance है ना, ये वैसे भी एक गेस वर्क पे थोड़ा बहुत चल रहा है. हम फाइनल ऑर्डर पे डिस्कस करेंगे मेजॉरिटी. अभी तो हम ये देख रहे हैं कोई भूखा ना मरे, किसी के बच्चे स्कूल जाना ना रुके किसी का. Hmm. बट जनरल टेंडेंसी ये है कि वाइफ्स को एक ये एडवांटेज मिल जाती है ऑफ दिस गेस वर्क. बट सो मेनी टाइम्स साल साल निकल जाता है, एक इंटरिम मेंटेनेंस नहीं अवार्ड होती. और होता भी है तो बहुत लेस होता है, 5,000 6,000. You see any order, you read any order, even cases which have reached the Supreme Court, 5,000, 10,000, 15,000. कहने की बात है कि 30% तक अवार्ड होता है, 20 to 30. बट सडनली हस्बैंड्स बीमार हो जाते हैं, उनकी मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं, उनके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, बहन भाई व्हाट नॉट, अनमैरिड बहनें, डिवोर्स्ड बहनें, सब आ जाती है घर पे. अरे there have been cases where I'm standing in court and judge has told one party that मुझे पता है कि जो हो रहा है गलत है, बट ये लोग लॉ में एक लूप होल है जिसे ये यूज कर रहे हैं. जैसे आपने कभी भी नोटिस किया होगा, सडनली जहां वाइफ अलग हुई, वहां सडनली हस्बैंड्स को पेरेंट्स डिसोन कर देते हैं.
Suddenly Hmm. on paper, Oh yeah. they make a publication. I am disowning so and so. It's very common in India. I have seen, yeah. Common. It's like a Yeah. template that is being used. Hmm. अच्छा, best I'll tell you, nobody, I've seen people don't use brains. आपका समन्स उसी एड्रेस पे रिसीव किया है दोनों पार्टीज ने, उसी लॉ फर्म के दो लॉयर्स, दो फादर मदर को अलग और बेटे को अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा फादर मदर के साथ रह रहा है, आप समन्स वहीं भेज रहे हो और आप कोर्ट को ये नहीं बता रहे हो कि समन्स सेम घर में रिसीव हुए हैं जो इस इंसान को ये लोग डिसोन कर चुके हैं। देयर हैव बीन केसेस जहां साफ दिख रहा है, नो नो एक्शन। And court doesn't take any action on this? Contempt, nothing? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देखो फैमिली कोर्ट्स में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा के देख लो आप, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन फैमिली लॉज में क्या होता है ना, फैमिली लॉज में हर एक का एंड गोल, एज लॉयर्स हमें भी पता होता है ये जजमेंट तो नहीं आए। आप देखो कितने कम केसेस, majority of the times you will see केस सेटल हो गया। अब उसमें दो तरह से देखते हैं लोग, कुछ लोग ये बोलते हैं लेडीज तो फाइल ही इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं, ऐसा चाहिए। so they file false cases, then settle the cases, and then you know the cases are false, right? And बहुत लोग ये कहते हैं कि हस्बैंड्स को शादी करनी होती है दोबारा। लो एट द एंड 40-45 हम्म। अगर आप किसी का डिवोर्स केस खींचते हो तो उसकी मैरिजेबल एज खत्म हो रही है, इट्स अ फैक्ट। So a lot of times what I have seen is men, they contemplate कि अगर मंथली दे इंटरिम इतना सेट हो गया, मंथली देना पड़ रहा है, अगर वाइफ की डिमांड रीजनेबल है, अगर वन टाइम एलिमनी शी सेज आई वांट दिस मच एंड यू कॉन्टेम्पलेट कि 5 साल 6 7 7 साल में इतना मंथली का बनी जाएगा, दे से ओके विल सेटल एंड विल I'm पे यू getting अप। one question. The husband have all let's say husband is giving maintenance, so he can and if they again come to the mutual agreement, they both just started feeling emotional for each other again. So they can always come together and live their life. ऑलवेज ऑलवेज कम टुगेदर, स्पेशली हिंदू मैरिज में तो आप डिवोर्स के बाद भी डायरेक्टली शादी कर सकते हो ना आपस में। So दूसरा, maintenance will stop this maintenance. when the wife is living with you then why do you need to pay maintenance? कोर्ट को क्या मतलब है आपसे? अगर वाइफ जाके नहीं बोल रही कि मुझे और मेंटेनेंस दिलवाओ, then court has no problem, even if you, even sometimes people don't even withdraw their matters। आप तो वाइफ ही जाएगी ना कोर्ट को बोलने की आई नीड मेंटेनेंस। सेकेंडली, आपके जितने भी केसेस हैं, consummation of marriage equals to condonation of anything that has happened in the past। आपने माफ कर दिया ना सामने वाले को। If you can तो explain this term little more to us, like yeah, for our consummation of audience. consummation of marriage is when you have a sexual relationship in the marriage, right? You consummate the marriage, and condonation is माफ करना। जैसे डिवोर्स, आपने किसी पे डिवोर्स केस डाला, डिवोर्स में अगर आपने मिड प्रोसीडिंग यू गो बैक टू योर हाउस, यू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द पार्टनर, you start living together, then the court will assume you have condoned all the acts of the partner। आपने उसको उसके पुरानी क्रूअल एक्ट्स के लिए, अडल्ट्रस एक्ट्स के लिए माफ कर दिया। तो वंस आपने माफ कर दिया एंड द हस्बैंड और वाइफ प्रूव्स दैट, तो आप चाह के भी ये केस चला के देख लो, बिकॉज कॉन्डोनेशन इज एन एक्सेप्शन। जब आपने किसी को माफ कर दिया तो डिवोर्स किस बात का, Hmm. राइट? तो और दूसरा होता है विड्रॉल। इवन अगर आपने देखो क्रूअल्टी पे अगर आपका केस चल रहा है और आप पिटिशनर हो, डिवोर्स पे आपका केस चल रहा है या मेंटेनेंस पे आपका केस चल रहा है, किसी भी चीज में आप पिटिशनर हो, आपके पास कभी भी राइट है अपना केस वापस लेने का। कोई भी स्टेज पे कोर्ट के नॉट टेल यू नहीं अब तो मैंने इस केस को बहुत साल दे दिया, आई एम पर्सनली अटैच्ड विद द केस, मेरे इमोशंस जुड़ गए, मैं वापस नहीं लेने दूंगा। दे कैन ऑल यू कैन ऑलवेज टेक दैट, ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट नहीं ले सकता। अब आते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पे। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स डाल रहे हैं तो आप दोनों ही पिटिशनर्स हैं, या जॉइंट पिटिशनर्स। तो उस केस में अगर बायलेटरल विड्रॉल है, कोर्ट्स आर हैप्पी। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इकलौता शायद ऐसा डिस्प्यूट है जहां कोर्ट कोई मौका नहीं छोड़ता आपको मीडिएशन में डालने का। Yeah.
है ना? तो वहां तो कोर्ट्स आर हैप्पी, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में यूनिलेटरल विड्रॉल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपका 2 मोशंस में डिवोर्स होना है, 2 स्टेजेस में। पहली स्टेज पे आपने आधे पैसे ले लिए, दूसरी स्टेज पे आपको आधे लेने थे, आप दूसरी स्टेज पे आए नहीं। वो आप नहीं कर सकते। दैट विल बी कंटेम्प्ट, क्योंकि लोग करते थे एक टाइम पे। तो अब उनसे एफिडेविट साइन करवाए जाते हैं, मैं विड्रॉ नहीं करूंगी, Okay. मैं आधे पैसे लेके विड्रॉ नहीं करूंगी। और हस्बैंड को ये सलाह दी जाती है लॉयर्स के थ्रू कि पहले मोशन में कम पैसे देना, सेकंड मोशन में बाकी पैसे देना। So these are things that go on, right, in a practical world. क्योंकि हमें पता है ना, अगर किसी को आप 80% दे दोगे तो वो 20% के लिए क्यों, फिर तो वो थोड़ा खींचेगा। Ma'am, now I really want कि हमारे पास like 5 minutes only left, 5-10 minutes. So we did cover the high alimony, like जो इकट्ठा हाई एकदम से पैसा. एलिमनी, Yeah. देखो, जब आप कोर्ट के पास जाते हो ना, तो एक एलिमनी टर्म जरूर है जो एक टाइम पर सेटल भी होती है। majority टाइम्स जो आपको एलिमनी मिलेगी वो आप आपस में डिसाइड करोगे। हाई एलिमनी क्या है? हस्बैंड की 20 to 30% तक को तो कोर्ट आपको कुछ ना कुछ करके, जब आप बहुत ज्यादा प्रूव करोगे, दे देगी। हाई एलिमनी नॉर्मली सेटल होती है जब आप आपस में बैठ के मीडिएशन से या किसी भी तरह, मैं अपने सारे केसेस विड्रॉ कर लूंगी, तुम्हें डिवोर्स देने को तैयार हूँ, हस्बैंड कहता है मुझे डिवोर्स दे दो। सारे केसेस मीन्स. सारे, तो एक जनरल उसमें बात करते हैं। जब हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट होगा तो एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डलेगा, एक मेंटेनेंस का केस अलग से डलेगा। And I have seen blackmailing complaints, blackmailing FIRs also. हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से Yeah. इज, एक 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 तो आपका 498A का केस डल जाएगा। बाय 498A मैं डाउरी डेथ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मेरी ज्वेलरी रख ली, मेरा मुझे मारा पीटा, मुझे दहेज मांगा, वो सारे सेक्शंस जो आप लगा सकते हो, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, आप सब लगा के एक केस बना के पुलिस के पास जाते हो, महिला थाना टू बी प्रिसाइज, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक्ट। सो दैट इज अ क्रिमिनल केस। उसके बाद आप एक डोमेस्टिक वायलेंस केस डालोगे, फॉर शेल्टर, फॉर मनी, फॉर चाइल्ड कस्टडी टेम्पररी, राइट, उसके लिए डालोगे। देन आप एक 125 का केस डालोगे। देन डिवोर्स बहुत कम लोग डालते हैं, डिवोर्स, क्योंकि एट द एंड जब आप सेटल करोगे तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स तो होना ही है ना? तो ये 3-4 केसेस आपने बनाए, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट की एपेटाइट कितनी है फॉर लिटिगेशन। You have to see the client can afford for a long duration 1 case, 2 case, 10 cases. क्योंकि अगर आपके क्लाइंट की एपेटाइट ही नहीं है, बेचारी वैसे ही स्ट्रगल कर रही है या वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, एंड आप उसको बोलो कि हम तो ये 6 केस डाल सकते हैं, तो वो 5 Generally do. महीने, हाँ, Lawyers do they suggest these. Yeah. राइट, बट यू हैव टू सी व्हाट इज द रिस्क एपेटाइट ऑफ योर एंड लिटिगेशन एपेटाइट ऑफ योर क्लाइंट। अगर आपका क्लाइंट इमोशनल है और वो नहीं झूठ सच बोल सकता कोर्ट में, तो आई वुड रेकमेंड मत लिखो। किसी भी शादी को अगर आप ऑनेस्टली, अगर आप क्लाइंट की बात सुनोगे ना, आप सच लिख लिख के एक बहुत अच्छी पिटिशन बना सकते हो। क्योंकि व्हेन टू पीपल आर लिविंग टुगेदर, देयर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ तो उनकी शादी में हुआ होगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि यू हैव टू लाई थ्रू योर टीथ। तो आप ये 5-6 केसेस आप बनाओगे, बट यू हैव टू सी क्लाइंट कितने सर्वाइव कर सकता है। अगर वो 5 साल तक वो 2 केसेस अच्छे से लड़ ले, इट इज बेटर देन फाइलिंग 7 एंड वो बेचारा स्टीम आउट कर जाए और एंड में सरेंडर कर दे। आप मुझे एलिमनी पूछ रहे हो ना, पीपल फाइल फॉल्स कंप्लेंट्स। मैं आपको बता रही हूँ, मेजॉरिटी सेटलमेंट्स मैंने क्यों होते देखे हैं। लड़कों की तरफ से सेटलमेंट है, मेरे माँ बाप को छोड़ दो, टेक बैक ऑल द केसेस, मेरे को आगे शादी करनी है, सो आई शुड नॉट हैव अ ब्लैक मार्क, राइट, आई हैव अ रेपुटेशन एंड आई हैव अ जॉब, आई कांट बी स्टैंडिंग इन द कोर्ट लाइक एन अक्यूज्ड and come on every hearing, because that's a big enough problem. When you're a petitioner or a complainant, you don't have to be in court every time. But when you are an accused on bail, you have to appear every time. Otherwise, जज को 2 मिनट नहीं लगते लॉयर को बोलने में, लेके आओ वरना मैं नॉन बेलेबल वारंट्स निकालता हूँ, Yeah. It's राइट? bail also is difficult in such matters. हाँ, but अब देख, now it has become easier In over a period of 2012, it was way more difficult. way more difficult, way more Yeah. difficult.
But over a period of time होता गया ना, every law that will come, initially it will be very harsh because the problem in the society is really bad. अगर आप मुझे बोलो आज भी ladies are not being burnt, I disagree. There is no dowry, I disagree. मुझे ऐसा लगता है आप कितना भी पढ़ा लिखा घर पकड़ लो, in the garb of gifts, इतनी डाउरी चलती है आज भी. लड़के को चेन, लड़के के फादर को चेन, लड़के के उसको ये उसको वो कर करा के जी ये तो हमारा कस्टम है. ये उस पे रील्स भी बनती है इस पे तो नॉर्मल या डाउरी यहाँ चलती है. क्योंकि मेरा डाउरी आपका जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो भी कस्टमरी गिफ्ट्स को एक्सक्लूड करता है. बट मेरा कहना ये है जो चीज टू वे नहीं है वो गिफ्ट नहीं है, जो एक की मजबूरी है. सो लड़कों के लिए वो सारी चीजें एज वी डिस्कस्ड उसकी वजह से दे सेटल. एंड लड़कियां पता है क्यों सेटल करती हैं? उनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं बचे, उनके पास सर्वाइवल के पैसे नहीं बचे. एंड इट इज नॉट इजी. एंड आजकल तो जिस लड़की ने केस डाला उसके ऊपर पहला ये थॉट होता है कि ये तो झूठ बोल रही है. व्हेन यू लुक इनटू एनी रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है. मैं बताती हूँ केस झूठा क्यों पड़ता है. मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स लॉयर्स एग्जैजरेट. और तो उस चक्कर में जो 10 चीजें हुई होती है आप उसे जब 100 बनाओगे द गर्ल विल नॉट बी एबल टू होल्ड दैट इन कोर्ट. एंड मोस्ट कॉमन लाइन 3 जोड़े में घर से निकाल दिया या सेम सेम कंटेंट. अरे आई टेल यू वन मोर थिंग. लड़की कंप्लेनेंट है, लड़की को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर. लड़का डिफेंस काउंसिल लेके आता है, उसको लाखों रुपए मिल रहे हैं, वो मेहनत कर रहा है उस केस पे. देयर बीन सो मेनी टाइम्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फाइल खोलेगा ना सुबह, वो कोर्ट आज ये वाला केस लगा है, हाँ जी सर, फाइल खोलेगा. देयर बीन टाइम्स आई सीन, देयर बीन टाइम्स क्या सच बोलूं तो द रिस्क ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, majority ऑफ टाइम्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फाइनल में आर्ग्यू थोड़ी करेंगे. जज उनसे क्वेश्चंस पूछेगा, वो उसे आंसर कर देंगे. 313 भी द कोर्ट. होंगे, राइट? कुछ नहीं होता. सो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर. 7-7 साल लेडीज अपने उनको यही नहीं पता होता हमारा केस आ गया, पुलिस ने वीक केस बनाया, स्ट्रॉन्ग केस बनाया, नहीं पता. आपने पुलिस को कंप्लेंट करी, फिर पुलिस ने अपना खाना पूर्ति करी, आगे डाला, वहां आपने आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट किया. दूसरा, एज लॉन्ग एज आप एक बिल्कुल ही डाउट, बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल प्रूव ना कर दो कि गिल्टी है, तो वो तो बेनिफिट ऑफ डाउट पे छूटेगा ही छूटेगा. बियॉन्ड रीजनेबल होना पड़ेगा ना. तो इन कहीं ना कहीं अनफेयर है. इनिशियली लड़के के लिए अनफेयर है क्योंकि वो बेचारा पुलिस सिस्टम में फंस जाएगा, बेल इसमें उसमें. लेकिन अगर सच में भी कुछ हुआ है तो ऐसा नहीं है हर जगह जहां अक्विटल है वहां इनोसेंस है. ये हम सबको पता है. एंड दैट इज वाई जहां क्लियर इनोसेंस होती है या जहां एविडेंस कम होता है, इन दोनों की इनोसेंस की प्योरिटी में फर्क होता है और ये कोर्ट्स को पता होता है. आपकी जजमेंट्स आप जब पढ़ोगे दोनों में फर्क होगा. सो ऐसा नहीं है द women आर ऑलवेज lying एंड ऐसा भी नहीं है द men आर ऑलवेज abusers. इट्स अ वेरी थिन लाइन. बट आप कोई भी रिलेशनशिप खोल लो टू वे होगा. इट्स हु हैज द बेटर लॉयर. So at the end they settle due to these reasons and that is why high alimonies. Alimonies तो टेबल पे बैठ के डिसाइड होती है. majority टेबल पे बैठ के डिसाइड होती है between two lawyers and the clients. जो जल्दी हार गया, I always say it's a battle of wits. Patience Always. also, how much you can fight. Patience and how much you can fight. जो जल्दी हार गया ना वो लिटिगेशन में गया. नॉर्मली लोग हार जाते हैं, उनको लगता है कौन जाएगा बार बार, एक स्ट्रेस है दिमाग में. So one question I want to ask on behalf of our audience, lawyer audience, how much a lawyer should charge to the client, like husband and wife? Like what's the reasonable? बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. आई हैव सीन पीपल डू केसेस फॉर 5,000 रुपीज. मुझे लगता है तुम इसमें खर्चा कैसे निकाल रहे हो? एंड आई हैव सीन पीपल चार्ज लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज. ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. अगर आप मुझसे देखो, इनिशियली तो आपके पास केसेस आने चाहिए इफ यू आर अ न्यू लॉयर.
तो जब आप अपना इनिशियली तो हाथ मांझना है ना अपना, यू हैव टू sharpen your tools, right? So Yes, yeah. do that. But I don't believe in operating in a loss for the sake of learning. I believe you should give your heart, soul for the matter, and इतना अच्छे से तैयारी कर लो. बट अगर आप इतने अच्छे से तैयारी करनी है तो उसके लिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल तो होना चाहिए और पेट में खाना होना चाहिए. सो व्हेन यू से डू इट फॉर फ्री, till it's a good cause, I don't believe Mm. in it. For Till it's a for good really cause. vulnerable women or men, yeah. Oh, absolutely. If somebody is unable to afford you, but then you feel it will make a difference, you can do it for free. हाँ, एक चीज मुझे पर्सनली एक प्रॉब्लमेटिक चीज लगती है, वो है दैट वन टाइम फीस. Hmm. वन टाइम फीस कभी कभी कैन प्रूव टू बी सच अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. आप देयर वाज अ केस अभी, मैं एक सीनियर सिटीजन मैटर में अपॉइंट हो गई. ठीक है, मैं आई चार्ज पर अपीयरेंस. सो सीनियर सिटीजन मैटर्स तो हर हफ्ते लगते हैं. Hmm. सीनियर सिटीजन मैटर्स हर हफ्ते लगते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 दिन. उससे लंबी डेट तो उन्हें देने में प्रॉब्लम आती है. चाहे आप वहां जाके सिर्फ अपीयर होके आ जाओ, बट देन यू हैव टू अपीयर. तो जस्ट इमेजिन, आपने तो अपना ले लिया एक फिक्स्ड अमाउंट, और वो हर हफ्ते मैटर लगना शुरू हो गया. यू विल गो क्रेजी, योर कैलेंडर विल गो फॉर अ टॉस, एंड यू विल इनकर एक्सपेंसेस. तो वन टाइम फीस आई थिंक से वो लॉयर एक्सेप्ट करे जो एक पर्टिकुलर कोर्ट में पूरा दिन रहता हो. Hmm. अब वो फीस 20,000 भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर सिचुएटेड. Yeah. बट अगर आप जैसे आई गो टू दिल्ली एनसीआर, मेरा जो कवरेज है वो दिल्ली एनसीआर, तो आई कांट अफोर्ड टू डू अ वन टाइम फीस ना, बिकॉज मेरा तो एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है. प्लस वन टाइम फीस कभी कभी बहुत डैमेजिंग हो जाती है. लोग 156(3) मैटर्स डालते हैं जब, तो हर Hmm. कोई लॉयर कहता है वन टाइम फीस दो, क्योंकि सबको क्या लगता है कि एक बार एटीआर आ जाएगी, फिर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, फिर ऑर्डर आ जाएगा. ऐसा होता नहीं ना. लेकिन नहीं होता. एटीआर महीनों नहीं आएगी, उसके बाद 4 बार जज छुट्टी पे होगा, उसके बाद आपका 156(3) अगर रिजेक्ट हो गया और 200 पे चला गया मैटर, तो फिर आप फंस गए सालों के लिए. फिर 3 साल तक अपना वकालतनामा को पूरा करते रहो आप, क्योंकि 3 इयर्स का पीरियड रखते हैं ना यूजुअली वकालतनामे पे. सो इट्स ऑलवेज बेटर, जैसे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, वैसा आप भी एक डेडलाइन लगा दो. इफ यू आर अनेबल टू चार्ज पर, उससे हाँ क्लाइंट थोड़ा जाएगा, बिकॉज क्लाइंट को जब आप हर पेज अपीयरेंस पे पे करना पड़ रहा है. क्लाइंट्स आर वेरी स्मार्ट दीस डेज. दे विल कम टू यू, टेक द इंटरिम स्टे ऑन द प्रॉपर्टी, टेक द इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर. वो आपसे इमीडिएट स्टे एक अच्छे वकील से लेंगे, एंड जहां उन्होंने देखा कि मेरा अर्जेंसी खत्म हो गई, अब मैं 10 साल तक इसी घर पे बैठी हूँ या बैठा हूँ, वहां वो एक ऐसा लॉयर कर लेंगे जो उनसे वन टाइम बिल्कुल, जिसे सिर्फ जाके अपीयरेंस लगानी हो, क्योंकि ड्राफ्टिंग आप करके दे चुके हो, इंटरिम स्टे आप दिलवा चुके हो, अब सिविल केस चलेगा 15 साल, अब 15 साल आपको अपीयरेंस भी देंगे वो. सो दैट इज अ मिक्स यू विल हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन. आप क्या अफोर्ड कर सकते हो. अगर आप पटियाला हाउस कोर्ट ही जा रहे हो, रोज जा रहे हो, तो दिन के 6 केस बना लो वहां के, देन यू कैन गो इन दैट वे. बट अगर आपका टाइम एट द एंड लिमिटेड है, जैसे व्हेन वी डू पीएमएलए मैटर्स, तो हमें जब कोर्ट बुलाएगी तब जाना है. पीएमएलए मैटर्स में कोर्ट 15-15 दिन की डेट्स दे रही है, हफ्ते हफ्ते की डेट्स दे रही है. तो उन केसेस में अगर आपको अपनी पूरी डायरी एक क्लाइंट के लिए फ्री रखनी है, देन यू हैव ह्यूज रिटेनर्स रनिंग इन लैक्स. अगर मुझे कोई 22, 25, 30 लैक्स का रिटेनर मंथली देगा, तो फिर वो एक्सपेक्ट करेगा ना मेरा पूरा टाइम एज अ फर्म. So it will always depend on who your client is, where you are situated, and where your audience is situated. आप अगर कड़कड़डूमा के वकील बन के आप 10,000 अपीयरेंस लोगे, people will not hire you. वहां people are doing cases for 25,000. And so called seasoned lawyers, जो देखने में लोगों को बहुत बड़े लग रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दिमाग से कोई जज नहीं करता ना, लॉयर्स को तो उनके ग्रे हेयर से जज किया जाता है. दैट्स अ ट्रूथ दैट यू हैव टू फाइट एवरी डे, राइट. तो वो 25,000 में कर रहे हैं, तो आप कैसे अपीयरेंस के 25,000 मांग लोगे कड़कड़डूमा कोर्ट में
as long as the client does not have trust with you. तो सबसे important मुझे ऐसा लगता है client handling is the biggest skill a lawyer should have. Yeah. Client conversion, मेरे पास अगर client आया और वो मेरे ऑफिस से अगर निकला है बिना केस दिए, the only reason has been the person cannot afford me. It is as simple as that. There have been times we've not been able to settle on the financials because of affordability. But क्योंकि there have been times people have told me कि अगर आपका गाजियाबाद में चेम्बर नहीं है तो मैं आपके पास दौड़ के कैसे आऊंगा ये बताने कि कोर्ट में केस लग गया. मैंने कहा अगर आपको मुझे बताने आना पड़ रहा है दैट मीन्स यू हैव नॉट हायर्ड द राइट पर्सन. गो टू अ पर्सन हु इज अवेलेबल फॉर यू. मैंने कहा दैट्स माय जॉब. Yeah. सो क्लाइंट हैंडलिंग आई फील फॉर यंग लॉयर्स इज द बिगेस्ट थिंग. और वो हम सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीख लेते हैं. और जब आप वो सीख लेते हो देन देयर इज नो लुकिंग बैक इज व्हाट आई फील. और उसी के पैसे हैं. आप अपने क्लाइंट को कितना वैल्यूड फील करा सकते हो, शायद कुछ हद तक पैसे इसके भी है. बट हाँ, इतना भी नहीं कि पीपल ईट यू रॉ, बट हाँ, टू अ डिसेंट लेवल. Uh, really wonderful conversation. Like we actually go into depth of matrimonial disputes, maintenance, remedy. You know, you really told us so many new things, laws that I don't think maybe layman is known to it, or even a lawyers also. Anything else, ma'am, at last you want to share with our audience? Um, okay, so are there any questions that we have not taken as of yet? Yeah, let me ask my team member, Rudresh, to, I'll No. just come back. Yeah. And also, I'm in the meanwhile, I'm considering that you are either taking law interns or law students or young lawyers, right? Yes. So my only and only advice to them would be um, learn one thing, but one thing well. And whenever somebody comes to you, a prospect, everybody is a prospect. So don't ever think that somebody will come to you and say, "This is my case, please handle it on a platter." Everybody is a prospect. You just have to be very honest with them. When I'm talking to you, my objective is only and only to talk to you. My ulterior objective should not be कि हीना मेरे लिए क्या कर सकती है या मैं हीना को कैसे वो कर सकती हूँ या whatever. To be honest, Yeah. it shows. Second, don't tell everybody what your right is. When somebody actually asks you, give them a way out. Road maps are always better. आप जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप ये अगर आप मेरे पास एक प्रॉब्लम के लिए आए हो, आई विल टेल यू आप ये केसेस कर सकते हो, बट जो हम करेंगे दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इन योर कंस्ट्रेंट्स. अब आपके कंस्ट्रेंट्स आपका टाइम भी हो सकता है, आपके फैक्ट्स भी हो सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट भी हो सकता है, आपका फाइनेंशियल लिटिगेशन एपेटाइट भी हो सकता है. तो ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए आप एक सोल्यूशन दोगे. फॉरगेटेड वो क्या क्या कर सकता है, आप ये देखो कि उसके कंस्ट्रेंट्स में आप उसे क्या डिलीवर कर सकते हो. एंड थर्डली, ऑलवेज बी देयर. कोर्ट में आप अगर हर बार अपने क्लाइंट के लिए अवेलेबल हो ना, बाय आप आई मीन यू और योर टीम, बट ऐसा नहीं होना चाहिए देयर इज अ नो शो. नो शो हर्ट्स योर रेपुटेशन लाइक एनीथिंग. देयर आर सो मेनी टाइम्स मुझे आउट स्टेशन मैटर्स में लोकल काउंसिल्स हायर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही मैं क्लाइंट कैसे दे दूंगी, या सो मेनी टाइम्स मैं कोलैबोरेट नहीं कर पा रही. मेरे को ऑप्शन मुझे कुछ जगह खुद जाना पड़ रहा है बिकॉज मेरे को लोग ही नहीं मिल रहे हु कैन डू अ गुड जॉब. तो आई वुड से बी ऑनेस्ट, बी अर्नेस्ट एंड डोंट लाई. इट शोज. अगर आपको नहीं आता है ना, यू टेल द क्लाइंट आई विल रिसर्च एंड गेट बैक टू. आई थिंक दैट्स द बेस्ट आंसर यू कैन गिव. और चौथी बात, मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस का जहां तक सवाल आए ना, द लॉ इज नॉट डिफिकल्ट. Law is not difficult at all. A, you should be knowing all these acts that we've discussed, right? B, what is important is कि आप best solution क्या दे सकते हो. जैसे मैंने बात करी, अगर आपको इनमें से 2 एक्ट्स चुनने, क्लाइंट का उतना ही कैपेसिटी है, तो आप कौन से चुनोगे उसके पर्टिकुलर फैक्ट्स को देख के. तीसरा, लिसन वेरी वेल. झूठ भी पकड़ो. ऐसे केसेस में कोई आपसे आके सच नहीं बोलेगा. वो आपको अपना बेस्ट वर्जन सुनाएंगे जो उनके साइड की स्टोरी है.
जिसमें सामने वाला एक बिल्कुल विलन है एंड दीज पीपल आर एंजल्स. चौथा, वन थिंग दैट हैज वर्कड वेरी वेल फॉर मी इज व्हेन दे टॉक टू यू, वो जो हैबिट होती है ना कि आप सुन के नोट्स ले रहे हो, अगर एजुकेटेड क्लाइंट है ना, टेल देम आइदर टू टेक अ पेन एंड पेपर एंड स्क्रिबल डाउन एवरीथिंग दे आर फीलिंग विदाउट थिंकिंग, एंड और बी टाइप ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. इतनी बार जो मेरे पास स्टोरी इन ओरल फॉर्मेट आई है और जितनी बार वो जो स्क्रिबल्ड वर्ड डॉक्यूमेंट आया है मेरे पास, उसमें से स्क्रिबल्ड वर्ड डॉक्यूमेंट में इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं, बिकॉज एट द एंड ए इट्स कैथार्टिक फॉर द क्लाइंट, बी आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो वो सोच के बिना बोल रहा है. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कर सकते हो. सो क्लाइंट काउंसलिंग, आई फील मैट्रिमोनियल लॉ इज लेस अबाउट व्हेन यू आर इन कोर्ट, मोर अबाउट व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ इट. चाहे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सेटल करना है तो कब करना है, कितने पे सेटल करना है, सामने वाली पार्टी के कॉन्फिडेंस को गेज करना है, उनके सिचुएशन को गेज करना है, उन पे प्रेशर को गेज करना है, अपनी पार्टी के एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट और लिटिगेशन एपेटाइट को गेज करना है. ये सब करके आई थिंक दैट इज द मेजर वर्क यू गो थ्रू. I think I've lost you. Maybe your I can't see you. Okay. So, any questions that we have? Okay. So I think these things we can take care. बाकी अगर आपको मैट्रिमोनियल लॉ में आई थिंक क्लाइंट को सुनो, उससे अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते. इफ यू आर लिसनिंग टू द क्लाइंट इट्स द बेस्ट. आधे से ज्यादा टाइम आपको आंसर्स आपका क्लाइंट देगा वेन एवर यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू एन एप्लीकेशन और टू अ पिटिशन. You should actually take inputs from your clients. You can give legal inputs, but at the end, it's their life. They've lived it. They can best you give you the best answers to any problem or anything that the other party has given. अगर किसी ने बोल दिया my husband is a drunkard or my wife is having an affair or anything, तो उसका जो आपको बेस्ट रिस्पॉन्स है ना, फैक्चुअली, वो आपका क्लाइंट ही देगा. आप उसमें लीगल वो देख सकते हो या अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, बट इट इज बेस्ट यू स्टिक टू द क्लाइंट स्टोरी सो दैट व्हेन दे आर पुट अप ऑन दैट स्टैंड फॉर गिविंग एविडेंस, द क्लोजर योर डॉक्यूमेंट is to their real life, the lesser chances that they will fumble there. So that is something you can go around with. So if any one of you have any questions, we can take that.
So it was very nice talking to all of you. Thank you very much for having me.